Hello, everyone. Welcome to one more podcast with Shakeel, and he's from Mumbai and B.Ed aspirant, right? Yes, sir. So basically, Shakeel, first we want to know about your educational background and why you want to do B.Ed. Sir, I've completed my graduation in civil engineering from Mumbai University. Mhm. And the reason why I want to get into teaching is because this is a kind of profession that I really like. It makes a person feel very powerful. So, sir, the reason why I wanted to get into teaching is because teaching is a very noble profession. Right, Uh, as, 200%. as said by Nelson Mandela, that education is the best weapon that we can use to face the future. Hmm. Okay. This is the reason why you want to do B.Ed. Okay, and now when you come to know about this exams and basically when you started the preparation for the B.Ed CET. Sir, it's a very interesting story. I've been Interesting trying story. to, So definitely I want to listen this story. yeah. So, sir, since I completed my graduation in civil engineering in the year 2018, I graduated. Mhm. And in 2019, I got my certificate, the degree certificate. Mhm. Since then, I've been trying to kind of get into, teaching again, to continue with my studies. But Mhm. for 2 years, the starting 2 years, 2020 and 21, it was Corona. I could not, Right. I was struggling financially, at that time. Then after that, I started with, giving private tuitions. Okay. Uh, in the meantime, I wanted to kind of, continue with my studies, but I never got an opportunity. Mhm. I always used to try fill the form for B.Ed, but I used to, pass the date. Mhm. जब form चले जाता था उसके बाद, I used to kind of get the notice, or it used to come to my notice that the date has already been passed. This Okay. year, in the month of February, when I kind of, since I was very busy with my life, I never used to kind of keep a check on the notices that the CT cell updates from time to time. Mhm. The month of February, when I checked, I checked it on 3rd of February that the 5th of February is going to be the last date for the application of CT B.Ed exam. Mhm. I instantly filled the form. And so on the last date of the CT application, I filled my form and then I Mhm. ordered a few books online because I did Mhm. not know how to prepare for it. Because I only had hardly 25 to 30 days in my hand to prepare for the Mhm. exam. It was just a month ahead. So I ordered certain books. I also watched videos online, and the first and foremost thing which was very important for me was to decide my aim of how much I Mhm. want to, kind of score in the exam. Since I always wanted to go into Xavier's College, which is in Mhm. Marine, so I realized that you need to have the best score to get into college like that. Okay. Right. Which of course the kind of the good colleges that are available I got to know from your channel. Mhm. So I realized that I need to work very hard. Since then, for that 1 month, I started working really very hard. I prepared a complete strategy regarding what needs to be done, because I think when you manage things properly, it becomes easy for you to achieve your goals. Right. Right Very management, I important things you are mentioning here. To manage the things is basically management skill. Yes, please continue. exactly. So, sir, when I, kind of got the book, I realized, and I also watched it online, and I watched it through your videos regarding what are the things that I need to study. So, first was mental aptitude, Mm-hmm. and the second one was GK. The third one was teaching aptitude, Teacher and aptitude. then in the end, the fourth part was ELC. Mm-hmm. I kind of, took the previous year papers and I Mm-hmm. started analyzing regarding in which topic, from which topic most number of question comes. Right. Yeah. So I've learned that syllogism was very important. I've learned Mm. that the number series are very important Right. and stuff like that. The direction kind of thing, questions based on directions, the Mm-hmm. question based on calendars, these are very important. So I kind of made an index in which I gave, the topics. I set the topic preference wise, priority wise, regarding which topics need to be covered first. Mm-hmm. And so I started with the mental aptitude first.
Okay. Since I came from the engineering background, mental aptitude was comparatively easy. Okay. Right. 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 I was able to, I was able to cover a lot of topics in within 15 days with Hmm. rigorous preparation. Because I used to study since only had 1 month. I used Hmm. to, study 3 hours, 4 hours a day regularly. So, how many hours on a daily basis you devoted for the preparation in this limited period? Yeah. Sir, I used to study 3 hours, 3.5 hours every day, max to max Hmm. 4 hours because I was also working professionally. So in Right. the daytime, I used to work, and in the night, I used to dedicate this time for the CET preparation. Hmm. Yeah. So I kind of focused more on this mental aptitude. I was able Hmm. to complete it. I took mock tests, and when I got the confidence that I'm getting right answers and I'm able to, the very first mock test I remember when I solved, तो मुझे Hmm. टाइम कम पड़ गया था. मतलब I was solving it, and since कि मेरे पास 1.5 घंटा होता है पेपर 90 मिनट्स होता है पेपर सॉल्व करने के लिए. Hmm. Right. Yeah, I was able to solve only out of 100 questions, I was able to only solve 70 questions. So Hmm. in the first mock test. So I've realized कि ऐसे तो नहीं चलेगा. Right. Then I started managing my time. I made myself understand that if I really want to crack it, I have to give my best shot. I have to, when the moment I start writing the paper, I cannot take it lightly. I cannot be an underdog. I have to, give my best shot with every question that I do. So And basically, with the mock, how many mock you attempted for before appear the actual exam? sir, since the time was less, I was Hmm. only able to do 15 to 18 mock tests in that Okay. limited period of time. Since Hmm. I was prepared for 1 month. Hmm. And I think that has helped me a lot. Mock test has helped me a lot. Right, right. Basically, you as you mentioned ना कि first mock में time पड़ गया था कि I was only able to attempt the 70 questions out of 100. So gradually जब आप continue mock attempt करते हो, evaluate करते हो, काफी important point आपने mention किया 2-3 things. For example, first mock it was mock जिसमें आपने काफी अच्छे से strategize किया. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने मेंशन किया जो काफी जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल है कि प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करना टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टी लेवल व्हेन यू विल मेक प्लान अदरवाइज व्हेन यू विल टेक द सम गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट पीपल सो काफी इजी हो जाता है प्रिपरेशन. Exactly, sir. ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो जिस तरह से आपने प्रिपरेशन किया था जिस तरह से मॉक जिस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया था हाउ इट वाज इफेक्टिव इन एक्चुअल एग्जाम. Sir, it was very effective because first of all, when we write these exams, it is not just about how much we know about the content or the knowledge, how much knowledge we have. It is also more about, being calm, composed, and putting your best foot forward. It is also an exam of your mental strength. So when I started with the exam, when I started with the mock test, I knew that I was running short of time, in the initial test. But then I started improving, I started increasing my speed, and I've also learned about the kind of questions that I should prepare for. So when I started the actual test, during the exam, जब मैंने एग्जाम दिया, I was I मैंने शुरुआत में बहुत घाई करी. So I was able to complete my mental aptitude. लेकिन जब 40 मिनट्स गुजर चुके थे तो आई पैनिक अ लिटिल बिट कि कभी मेरा पेपर छूट ना जाए. तो Oh. कुछ या मेंटल एप्टीट्यूड में लास्ट वाला क्वेश्चन आया था. वो फैमिली रिलेशन ब्लड रिलेशन होता है ना सर. There was one passage out and on based on which there were 5 questions. तो Right, अगर मैं उसमें तुक्का लगाता तो मेरे पांचों गलत चले जाते शायद. right, right. तो मैंने वो 5 क्वेश्चन को होल्ड पे रखा और मैंने जनरल नॉलेज और टीचिंग एप्टीट्यूड पहले करना चालू किया. Great. देन आई रियलाइज कि जनरल नॉलेज और टीचिंग एप्टीट्यूड मेरा आराम से आधे घंटे में हो गया था. Hmm. 30 to 35 मिनट्स. और फिर भी मेरे पास 10 to 15 मिनट्स बच रहे थे सिर्फ वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जो मुझे नहीं आ रहा था. Hmm. बट जब मैंने एक सुकून में जब मैंने शांत दिमाग से सोचा तो ब्लड ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन मेरा बन गया. और Right. फिर मुझे 5 क्वेश्चन के आंसर आ गए. So I think Hmm. that was very important because I did not, even though I panicked, but I realized that I had the strength to pick myself up
and go for it. That was very हम्म important. आई वॉन्ट टू एड इन दिस सिचुएशन बेसिकली जो मैं सारे स्टूडेंट्स को हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ट्राई टू अटेम्प्ट द इजी क्वेश्चन फर्स्ट, डोंट स्टक विद द एनी सच टाइप ऑफ द पजल्स या फिर जो ट्रिकी क्वेश्चन है, इफ यू थिंक इट्स ट्रिकी नहीं हो पा रहा है तो फॉर अ मोमेंट जस्ट लीव इट, राइट। तो पहले जितना हो Exactly. सके इजी पे कर लो, यू कैन सेव योर टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर से आप उस डिफिकल्ट क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट कर दिए और आपसे नहीं बना, तो जो इजी आपसे हो सकता था देन यू विल लीव दैट क्वेश्चन। तो ये एक तरह का स्टूपिड वर्क होता है, यही सब सारे स्ट्रेटेजी होते हैं। और यही बेनिफिट होता है जब आप टॉपर के पॉडकास्ट को देखते हो, उनके एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करते हो, लोगों के मिस्टेक से लर्न करते हो। सो जो लोग भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, दे आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, सो उनके लिए सब सारे लर्निंग पॉइंट है। यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ यू कैन स्कोर दिस इन लिमिटेड टाइम। 99.89 समथिंग जो परसेंटाइल है बेसिकली आपका। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू saw your result? What was your expectation basically? Sir, I was expecting really good marks हम्म because the moment I came out of the exam hall, I was very happy कि इतने राइट कम टाइम में ही पेपर अच्छा चले गया. हम्म मतलब I was elated. But then at the time of result, when result came at 7:30 in the evening, result आया था, हम्म and I opened up the result and it was 99.83. I was very nervous, so I was very overwhelmed. खुशी भी हम्म हो रही थी और बताने भी नहीं आ रहा था कि मतलब how to express it. So राइट that राइट was, yeah. I contacted my family, I contacted my students, and I हम्म shared that news with them, and they were also very happy for me. राइट राइट, बट थोड़ा सा ही मिस हो गया ना, नहीं तो 100% हो जाता। ठीक है, नॉट एन इशू। फिर भी जिस टाइम पीरियड में आपने प्रिपरेशन किया, इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट यू कैन से। सो व्हाट इज द आइडियल टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? कितने टाइम पहले स्टार्ट करना चाहिए? Sir, I've realized when I, was teaching some of the topics, mental ability के topics, हम्म to a regular student who does not come from a very strong maths background, तो उनको हम्म mental ability में बहुत टाइम लग रहा था. So अगर एक इंसान का मैथ्स वीक है या फिर एक इंसान मैथ्स में स्ट्रांग नहीं है और लॉजिकल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी उसका स्ट्रांग नहीं है, so they should dedicate one complete year. ओह That is what राइट I राइट personally feel. हम्म And if a person is good in maths and उसका mental ability अच्छा है, उसका IQ, अगर एक इंसान का IQ level अच्छा है, so I think 5 to 6 months will also be sufficient. So basically for you there is a one plus point ki your background, you are good in math because basically as you said ना, you are civil engineer, तो एक IQ लेवल जो होता है वो काफी बेटर होता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो पीपल होते हैं, राइट। तो नॉर्मली जो भी स्टूडेंट्स दे वांट टू प्रिपेयर, एज जो शकील ने मेंशन किया बेसिकली 6-7 मंथ या फिर 1 आवर्स इफ यू कैन डिवोट, तो आराम से इजीली प्रिपेयर कर सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड फॉर विच कॉलेज यू आर टारगेटिंग बेसिकली, व्हाट इज योर होता है ना प्रेफरेंस, फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस किस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे Sir, the only college that I ever thought of going was Xavier's. हो? Because I always wanted to. I always liked the architecture. So, राइट बड़ा gothic architecture था. So I liked it, like since I was a child. और हम्म फिर वो धीरे धीरे manifest होते गया. And through your videos, when I came to know that Xavier's is one of the best college in Mumbai, तो हम्म मतलब उसी को aim करना था, Xavier's को ही aim करना था. Although हम्म BTTC is also number one, हम्म in my opinion, BTTC is better than Xavier's. But the reason that I would choose Xavier's is because I'm more inclined towards it. I've always liked it, and I think that कि अगर आप Xavier's में भी मेहनत करोगे तो you'd get a good place. Right, right, definitely, definitely. So, how the Manuver videos and platform helpful for the students? कितना effective, कितना helpful रहता है? Sir, Manoeuvre is very important because it helps the child, a student, with the initial preparation, which is very हम्म important. It gives a हम्म framework to the students regarding the topics that need to be learned, regarding the हम्म colleges that they should aim for. It हम्म provides the guiding force, it gives a direction to the student that makes a student understand what is the हम्म requirement of, kind of getting their dreams achieved, which is very important. मेनोवर के जो टॉपिक वीडियोस मैंने देखे थे, मतलब मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं राइट राइट और फिर उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट और फिर टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे करना है, मेंटल एप्टीट्यूड कैसे करना है, और
जो करंट अफेयर्स था बेसिकली, तो उसमें आई वाज वेरी नर्वस, बट हम्म, मैनोवर has helped me a lot because through Manoeuvre videos I've realized कि मैं जीको को सेक्शन में बांट बांट के करूँ। राइट तो राइट राइट। जो अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आई गिव यू एन एग्जांपल सर, हम्म यू नो वो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर समथिंग होता है, जैसे कि हम्म, एग्जांपल स्पिग्मामोमीटर इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, राइट राइट, है ना, एंड altimeter is used to measure the altitude. So करेक्ट। उसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है. That is हम्म something that I got to know from Manoeuvre videos. So it हम्म, kind of created a framework through which I could proceed. मतलब उसने Manoeuvre ने मेरे लिए बाउंड्री सेट करी है और मुझे बताया है कि मैं किस दिशा लेकर अपने ड्रीम्स की तरफ चल सकता हूँ, कौन सी राइट। चीजें करनी है, which is very important. So we say basically always we try to resolve the student related issue, चाहे वो प्रिपरेशन रिलेटेड हो चाहे एडमिशन रिलेटेड इशू हो। मतलब जितना हो सकेगा हर एक वैरायटी ऑफ कंटेंट को हम डिलीवर करते हैं कि जिससे कि जो भी मैनोवर स्टूडेंट हो या फिर नॉन मैनोवर स्टूडेंट हो, एवरीवन गेट द बेनिफिट फ्रॉम द वीडियोस। बाय द वे, जिसको भी प्रिपरेशन करना होता है अंडर द एक्सपर्ट फैकल्टी, तो वो मैन्यूवर से कनेक्ट भी होते हैं, ज्वाइन भी करते हैं। बट ऐसा हमारा वो नहीं होता है कि चाहे जो मैन्यूवर स्टूडेंट हो, डेफिनेटली दे विल गेट द स्पेसिफिक स्पेशल ट्रेनिंग। जो भी फैकल्टी होते हैं दे विल लर्न द शॉर्टकट ट्रिक्स, मेथड लर्न करते हैं, इजी होता है। बट जो नॉन मैन्यूवर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी हमारा पूरा एफर्ट होता है कि जो भी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें, जितना हो सके स्टूडेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें। एंड यही बेसिकली मेन पर्पस होता है। तो होप और सो सर, दो। यस यस। सर आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग. जब B.ED CET की ऑब्जेक्शन की आई थी, यू नो वेर यू कुड रेज एन ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग कि कौन से क्वेश्चंस गलत है और कौन से आंसर्स आपके सही है बट यू नो रॉन्गली मार्क थे आंसर की में, ऑब्जेक्शन की आई थी. तो मैंने उस वक्त आई कॉन्टैक्टेड मेनोवर, आई स्पोक टू वन ऑफ द स्टाफ फ्रॉम मेनोवर एंड आई टोल्ड देम कि मेरे इतने इतने क्वेश्चंस राइट है बट आंसर की में रॉन्ग बता रहे हैं. और एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन रेज करने का द सीटी सेल वाज आस्किंग 1000 रुपीज, राइट। which is just too much. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने 5 मार्च को आफ्टरनून शिफ्ट में मैंने एग्जाम लिखा था, तो एक क्वेश्चन था विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. राइट। सो उसका आंसर डेफिनेटली इंडिया था क्योंकि इंडिया जनवरी या फिर फरवरी सरपास कर दिया था चाइना, और मैंने उसका आंसर चाइना ही मार्क किया था बट आंसर की उसका आंसर चाइना बता रहा था. तो वहां पर तो क्लियरली मार्क्स जा रहे थे. सो आई कॉन्टैक्टेड Manoeuvre एंड आई रियलाइज्ड कि द वेरी नेक्स्ट डे someone a head teacher of Manoeuvre went to the CT cell to यस, मैं खुद ही मैं ही विजिट किया था। जी सर, आप ही विजिट किए थे और फिर कि दे फिर सीटी सेल ने वो किया, यू नो स्टेटमेंट दिया कि अगर एक भी बच्चा ऑब्जेक्शन रेज करता है तो सब बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा फॉर द सेम क्वेश्चन. राइट। सो Manoeuvre has been a very striking and guiding force in that. So that is, since I was able to get help from Inova before the CT exam happened, and even after the CT exam happened, speaks volumes about the kind of facility and help that your institute provides to students. एक्चुअली उसमें डाउट था, जो कोई इन्होंने अच्छे से नोटिफिकेशन नहीं रिलीज किया था कि ये ईच स्टूडेंट मतलब कोई एक करेगा या फिर सब, जिसको इसका बेनिफिट लेना है उसको करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई आई विजिटेड पर्सनली देयर एंड कॉन्टेक्टेड टू द जो सीडी सेल के कमिश्नर है, उनसे बात किया। तो इमीडिएटली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, आफ्टरनून में आप देखोगे 3 से लेके 4 बजे के बीच में उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया था जी कि सर, अगर से कोई सिंगल पर्सन ने भी एक क्वेश्चन के लिए क्लेम किया तो दैट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल। definitely. Okay. Okay. Any final suggestion from your end, Shakeel, for the new aspirant, those who are planning for the next year? Yes, the one message that I would like to give to all aspirants is that work very hard, because when you work Hmm. hard and even after working hard, if in case you fail, you will not have regrets because you Hmm. knew that you gave your best shot. So you have to work very hard, and if you're working hard, in addition to that, working smart is also important. You have to make a plan for yourself. You have to prepare a strategy through right management and techniques. You will be able to get to your goals. So I think Hmm. that is one message that I would like to give to all aspirants.
working हम्म। hard as well as working smart through strategies. डेफिनेटली डेफिनेटली सो वर्किंग हार्ड, अगर सो हार्ड वर्क ऑलवेज पे जैसा बोला जाता है, तो ये तो एक नॉर्मल सा थिंग्स है। बट वन मोर थिंग जो आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, अभी भी मेंशन करो, स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। सो इफ समवन विल इम्प्लीमेंट दिस ऑल द थिंग्स, देखो हार्ड वर्क तो इट्स कंपल्सरी, विदाउट हार्ड वर्क इट्स नॉट पॉसिबल टू अचीव समथिंग, या जो भी वॉट एवर द गोल समवन इज टारगेटिंग। सो उसके साथ साथ मैनेजमेंट इज स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट स्किल हो एंड स्टैंडर्डाइज करके अच्छे से कोई प्रिपरेशन करे तो डेफिनेटली कैन गेट अ बेटर स्कोर्स, एंड यू आर एग्जाम्पल हियर विद इन दिस Thank you, लिमिटेड sir. पीरियड, काफी अच्छा स्कोर भी किया है आपने। So hope so, guys, those who are watching this podcast, so definitely this session will be helpful for them to understand how to prepare, कितने टाइम में कैसे प्रिपेयर करना होता है। एंड हियर इज लॉट्स ऑफ द पीपल इन दिस पॉडकास्ट, आप देख सकते हो कंटिन्यूस सीरीज में, दोज हु आर स्कोरिंग द 99.99 परसेंटाइल आफ्टर प्रिपरेशंस विद अस, या फिर जो गाइडेंस आफ्टर द गाइडेंस फ्रॉम आवर साइड। ओके, सो thanks Shakeel to come here to share your experience with our students, our viewers जो next year के aspirant है। Any final comment you want to say something? Sir, I'm very glad that I was able to, I feel very privileged, honored, and glad to be able to speak to you and share my experience because it means a lot to me. Because this works as an incentive for what I've done. It gives me the motivation to keep going ahead in life. Right, right. So this is a kind of token of appreciation that I give. Thank you, Oh, sir. okay, okay. Nice to talk to you, Shakeel. So wish you all the best for your future, and अच्छे से एडमिशन करो। एंड जैसे आपने मेंशन किया, दिस इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, सो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि जब इस फील्ड में बेसिकली काफी अच्छा कुछ करो, बिकॉज गुड एजुकेशन इज अ इट्स अ नीड फॉर द सोसाइटी इन नाउ Yes, एरा। yes, sir. ओके, चलो, थैंक यू, थैंक्स टू कम हियर। Thank you, sir.